Hi students. Hello everybody. Hello students. I welcome you at Hemdisha English classes. I Hemant again welcomes you at Hemdisha English classes. Today I take pleasure to summarize the chapter The Red Trap from 12th class Flamingo, written by Selma Law. Yeah. This story is about an old disheartened paddler who is taken in and shown generosity by a young woman. Her generosity and kindness change his bitter attitude towards life. The paddler is a man who has fallen upon misfortune and now resort to selling red tapes, begging, and thievery. Now I would like to start summary in English first, after that in Hindi. A red trap. This story by Selma Lazaroff is about a poor vagabond who went around selling red tape. His life was full of struggle and misery. He had a resort to begging and petty thievery for survival. He plods along the roads and moves from one place to another, but still does not feel welcomed anywhere. One day, when he was musing over his red traps, he figured that metaphorically the whole world is a red trap. The world with its natural beauty, joys and sorrows, shelter, food and clothing is nothing but a red trap. These are just baits to lure men, like the bait of cheese or pork offered to rats or trap and kill them eventually. As soon as a person attempts to touch the bell, he is ticked and everything comes to an end. He mostly thinks it will of the world and find pleasure on it. And what is the important thing? He cannot really be blamed for this, as if the world has always treated him badly. He loved to think of people he knew who were caught in the trap, in others where we were about to get trapped soon. The generous old woman, what about beauty of this story? The generous old man. One day, while walking, he noticed a little cottage by side of the road and stopped to ask for shelter. Normally, he was frowned upon, but this time he was lucky to find an owner who was lonely enough to feel happy to get a visitor. He offered him meal, he offered him tobacco also. After some time, he told him each and everything, because the old man he used to live alone, and so he could find a company to talk with, and he started talking. And he told also how he could earn 30 kronor the previous month. He was able to show also the pouch where he kept his 30 kronors. Next morning, when both of them got up and the old man went to milk his cow, the peddler also got up and thanked him for his hospitality and went his own way. Half an hour later, his character overpowered him and he returned to the old man's house, broke the window pane, got hold of the pouch and sold the 30 kronor. And he kept walking through the woods and realized that he had been walking around and some part of the forest. Soon he recalled his thought about the world and the reckless realized that he was the victim of this time. He let himself folded by bait the 30 kroner was. He felt trapped in endless loop. It was a cold winter night and darkness was already surrounding in the forest, which means increased danger. Just as he was going to give up, he heard the sound of hammer strokes on iron, and there was actually iron mill where he went. And there was so much noise at the side that nobody noticed. The peddler opened the gate and entered the forge until the stood close to the furnace.
Yeah, there was a blacksmith. He was standing and he glanced at him. He was used to seeing homeless peddlers looking for shelter. So, when he could see the peddler with dirty appearance, red clothes, and a bunch of red grapes hanging on his chest, which is where when the peddler asked permission to stay, he just needed without honoring him with any verbal response. Only nodding response was there. The owner of Ramsro Iron Mills was on the inspection as he saw the peddler lying down close to the furnace. Yeah, noticing him, his condition, his poor condition, he politely asked him to come go with him, and the peddler refused the invitation as he was afraid that going to the interpreted his rejection as a sign of embarrassment because his race close. On noticing his uneasiness, her daughter Edla, she thought that he must have stolen something or else had escaped jail, but she continued to insist him to stay with them and made it clear to him that he is free to live wherever he wants. The peddlers were offered food and clothes. The next morning, the iron master and his daughter they were discussing about the miserable condition of the peddler. When the iron master said to her that they must make sure that he does not go around selling red tapes anymore. The petty plights of the peddler, complemented by the tatter clause, made it hard for Edla to believe that the main proper had education. To this, Padler responded with the theory of radius of the world. He expressed his beliefs in idea the whole world is big tape. Yeah, once again he started repeating, and that all day he will be caught in the trap too. As he was about to leave, the daughter protested that he should be allowed to stay for Christmas as they had already promised him a Christmas meal. Adla says that they constantly lives in the fear of being chased away and arrested. She insists her father that they should let him take a day off from the monotonous life. On the Christmas Eve, the peddler did nothing but sleep peacefully. It seems like he had not slept in ages. On the Christmas present, first of all, I would like to talk about dinner. After dinner, the daughter told him that the suit he wore was to be taken as a Christmas present from his father, and if he wished to spend the next Christmas in peace, then he could come back. Peddler could not say a word. He was amused by the generosity of the girl. Yeah, he was thinking nobody can welcome me, and the girl is welcoming, and really, she is really generous. In the next morning, what happened? He woke up late because for ages he did not sleep, so he could find a good pleasure. At the church, they were informed about the old crofter who had been robbed by a man who went around selling red tape. The girls was shattered that the iron master wondered if anything would be stolen from the house by the time they reached Captain Von Stow. On reaching home, they inquired where the peddler was. The valet informs them that he has left without stealing anything at all, and he kept three wrinkled 10 kroner notes. It contained a letter also stating that since Miss Edla had been so nice and generous to him, he wished to be nice to her too. He did not want her to be embarrassed by a thief. In addition, he wanted her to return the 30 crowns to the old man and consider a red tape as a Christmas present. The letter was signed as a Captain Von Style. At last, we can learn
As a conclusion, we can change the world through kindness and compassion. In addition, it teaches us the materialistic things never bring inner joy. Only love and respect does. Because there are so many things in our life that we can adapt, we can live by our own experiences. So, student, I have completed my summary from my side of the Red Trap from Flamingo, chapter number 4 in English. Now I will switch over to Hindi. I request you to subscribe, share and like my channel. Thank you very much. विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हेमदिशा इंग्लिश क्लासेस में। मैं हेमंत आपका स्वागत करता हूं एक नए पाठ 12वीं के पाठ रेड ट्रैप पाठ चौथे नंबर का पाठ है। ये बहुत बढ़िया पाठ है। इसमें बहुत सुंदरता से एक कहानी का वर्णन है जो मैं आपको समराइज करूंगा शुद्ध हिंदी में। यह कहानी है एक ऐसे पैदल यात्री के बारे में है जिसका कोई सहारा नहीं है, और लेकिन क्या होता है कि इत्तेफाक से एक युवा महिला द्वारा उदारता से जो उसके प्रति रवैया दिखाया गया है उसके रवैये को बदल देती है। वह व्यक्ति है जो दुर्भाग्य से गिर गया था, अब वो चूहे पकड़ने का काम करता है, भीख मांगता है, चोरी का करता है काम। तो क्या है ये द रेड ट्रैप? ये है चूहेदानी। सेल्मा लेदरलोफ की यह कहानी एक गरीब बंदे की है जो घूम घूम कर चूहा पकड़ने का जाल बेचा करता था। उसका जीवन संघर्ष दुख से भरा होता था क्योंकि उन्हें जीवित रहने के लिए भीख मांगना और कभी कभी छोटी छोटी चोरी करना पड़ता था। प्रत्येक दिन वो अपना चूहा पकड़ने के जाल को देखकर मुस्कुराता है और ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही एक जाल है। अपनी प्रकृति, सुंदरता, खुशी, दुख, आश्रय, भोजन और कपड़ों वाली दुनिया कुछ भी नहीं बल्कि एक चूहेदानी है। वास्तव में इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि दुनिया ने हमेशा उसी बुरी तरह से व्यवहार किया है। वो उन लोगों के बारे में सोचना पसंद करता था जिन्हें वह जानता था कि वे जाल में पकड़े गए हैं और दूसरों को हम जल्दी ही फांसने वाले थे। एक उदार बूढ़े आदमी का इसमें एक प्रसंग आता है कि एक जगह पे एक बूढ़ा आदमी रहता था एक सड़क के किनारे। वहाँ से ये पैडलर गुजरता है। वो बूढ़े आदमी के पास सहारा मांगता है, ठहरने की जगह मांगता है एक रात के लिए, और बूढ़ा आदमी जिसका कोई परिवार नहीं था वो भी उससे मिलके काफ़ी रोमांचित था। वो उसको भोजन करवाता है, तंबाकू की पेशकश करता है, बहुत उदार और भरोसेमंद था और अपनी अतिथि की प्रकृति को जाने बिना अपने बारे में सब कुछ बता दिया। उसने ये भी बता दिया कि पैसे के बारे में कि कैसे उसने पैसे कमाए थे, और उसने कहा पिछले महीने 3 करोड़ अर्जित किए थे, 30 करोड़ अर्जित किए थे। जब पैडलर को उनकी बात पे विश्वास नहीं होता था अपने पैसे दिखा भी देता है। अब अगली दिन दोनों उठते हैं, बूढ़ा आदमी अपनी गाय का दूध निकालने चला जाता है तो पैडलर भी उठ गया और उसने बूढ़े को धन्यवाद भी दिया कि कल रात को उसने बहुत अच्छा उसका आतिथ्य स्वागत किया था, आतिथ्य सत्कार किया था। आधे घंटे बाद क्या होता है, उसको अचानक उसके अंदर का चोर जाग जाता है। वो उठा, जागा, बूढ़े आदमी के घर लौट आया, खिड़की को तोड़ दिया, पैसे की थैली उठाकर भाग गया। इसके बाद वो सोचने लगा उसने बहुत अच्छी तरह से काम किया है और जाल में फंसने के लिए चोरी का काम किया। उस पैसे से जो चुरा कर लेके आया था वो उस समय ठंड सर्दियों की रात में एक जंगल में चला जाता है। अंधेरा पहले से ही जंगल के आसपास था जिसका मतलब खतरे में वृद्धि हुई थी, और उसने अपनी हिम्मत इकट्ठा की और बढ़ता चला गया। वहाँ पे इतना शोर था उसने देखा नहीं, किसी कारखाने की आवाज़ आ रही थी और आश्रय की तलाश में पैडलर भी लंबी दाढ़ी, गंदे रूप, गलेदार कपड़े और उसकी छाती पर लटकने वाला रेड टेप के साथ था। यही कारण था जब पैडलर ने रहने की अनुमति मांगी तो उसने बिना किसी मौखिक प्रक्रिया की आज्ञा दे दी। किसने? वो कारखाने के लोगों ने। और कारखाने के पास जो लोग बैठे थे, थोड़ी देर बाद उसका मालिक भी आया था। उसने तो उसको घर पे साथ आने का निमंत्रण भी दिया।
तो उसने मना कर दिया निमंत्रण के लिए, क्योंकि उसका सोचना था यही कारण है ऐसी स्थिति में था जब लोहे मास्टर ने उसके साथ, वो आयरन मास्टर था, कारखाने का जो मालिक था आयरन मास्टर, उसने उसके साथ आने का आग्रह किया तो उसने विनम्रता से निमंत्रण इनकार कर दिया, क्योंकि उसको डर लगता था कि बूढ़े आदमी से 30 कोनों चोरी करने के बाद दूसरे घर में जाकर उसे परेशानी हो सकती है। हालांकि पेडलर को उनके साथ आने के लिए मनाने के लिए नाकाम रहने के बाद लो मास्टर ने, मतलब आयरन मास्टर ने, अपनी बेटी एडला विल्मेंसन को उन्हें आग्रह के लिए भेजा। एडला ने उसको आग्रह किया तो उसे आरामदायक महसूस कराने का प्रयास किया, परंतु उसकी बेचैनी को देखते हुए उसने सोचा कि शायद इस पेडलर ने कुछ चुरा लिया होगा या जेल से बच निकला होगा। फिर भी ना वो उसको कहती है कि वो अपनी स्वतंत्रता से जी सकता है, जहाँ चाहे आ सकता है, जा सकता है, और पेडलर नकार नहीं पाया और क्रिसमस की रात उनके बिताने के लिए मान गया, क्योंकि उन्होंने तो निमंत्रण दिया था कि क्रिसमस की रात आप हमारे साथ मनाएंगे, और एडला ने उसे रोक लिया। पेडलर को भोजन और कपड़े की पेशकश भी की गई थी और लो मास्टर ने उससे कहा था कि सुनिश्चित करना होगा। अब उसकी उचित शिक्षा कभी हुई भी थी। जैसे पेडलर दिन के उजाले में साफ सुथरे कपड़े में प्रवेश करता है, लो मास्टर को एहसास हुआ कि यह कोई और व्यक्ति है। वो पेडलर पर क्रोधित था, उसे तुरंत जाने के लिए कहता। इस पर पेडलर कहता उन्होंने खुद एक गरीब व्यापारी होने का दावा किया था, वो कुछ भी नहीं। लेकिन लो मास्टर ने घोषणा की इस मामले को पुलिस में ले जाएंगे, उसकी गिरफ्तारी कराएंगे। तो वो आगे कहता है अगर पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया तो तुम भी जाल में पकड़े जाओगे। तो उसने बेटी ने विरोध किया कि उसे क्रिसमस के लिए रहने की इजाज़त देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पहले ही क्रिसमस का भोजन करने का उसका वादा किया था। एडला का कहना है कि पेडलर पूरे साल तक एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता जाता है और जहाँ पे भी जाता है उसका स्वागत नहीं किया जाता है। वो लगातार पीछा और गिरफ्तार होने के डर से इधर उधर भागता जा रहा है। अपने पिता से एडला ने आग्रह किया कि अपने नीरस जीवन से एक दिन दूर ले जाना चाहिए। लो मास्टर इस विचार के पक्ष में नहीं था, लेकिन अपनी बेटी के खिलाफ भी कुछ नहीं बोल पाया। उसने सोचा कि नहीं, चलो मेरी बेटी को सम्मान देता हूँ, मैं अपनी बेटी की बात को फॉलो करता हूँ, मानता हूँ, और केवल उम्मीद कि उनकी बेटी को उनके फैसले पर पछतावा नहीं होना चाहिए। उसने पेडलर को बैठकर खाने को कहा। पेडलर ने अपने निर्देश का पालन किया और बिना एक शब्द बोले वो खाना खाने लग गया। उसके समझ में ही नहीं आया कि ये लड़की की इतनी मदद क्यों कर रही है भाई। अब क्रिसमस की पूर्व संध्या आती है। थोड़ी देर के लिए वो उनके साथ था, उसके बाद सोने के लिए चला गया। वास्तव में देखा जाए तो लंबे समय के बाद उसके पास सोने के लिए उचित जगह थी। अब क्रिसमस के खाने के लिए 2 घंटे बाद वो जाग गया। रात्रि भोज के बाद बेटी ने उनसे कहा कि अगले क्रिसमस को शांति में बिताना चाहता था तो वापस आ सकता था। पेडलर एक शब्द भी नहीं कह पाया। वह लड़की की उदारता से खुश था। अब दूसरे दिन सुबह क्या होता है, आयरन मास्टर और उसकी बेटी एडला क्रिसमस मनाने के लिए जल्दी उठ गए। पेडलर तो अभी भी सो रहा था। यही कारण था कि उन्होंने उसे परेशान नहीं किया। चर्च में जाके पुरानी क्रॉप्टर के बारे में सूचित किया गया था, जो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लूट लिया गया जो रेड टेप्स बेचता था। अरे बाप रे, यह सुनकर लड़की हैरान और निराश हो जाती है और यह आदमी सोचने लगता है कि उनके घर पहुंचते तक कुछ न कुछ तो जरूर चोरी हो जाएगा। घर पहुंचने पर उन्होंने पूछा कि पेडलर कहाँ है, तो वैलेट उन्हें सूचित करता है कि कुछ भी उसने चोरी नहीं की और चला गया। और ठीक इसके विपरीत मिस एडला के लिए एक पैकेट छोड़ा है। एडला जैसे ही पैकेट खोलती है तो उसमें देखती है छोटा सा रेड टेप और 3 झुर्रियों वाले एक 10 क्रोनर नोट्स पाए, और उसमें साथ ही एक पत्र भी संलग्न था। क्योंकि मिस एडला उसके लिए बहुत अच्छी और उदार रही है, इसके लिए वो भी उसके लिए अच्छा करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि चोर द्वारा शर्मिंदा हो। इसके अलावा उसकी इच्छा थी कि एडला उस पैसे को बूढ़े आदमी को वापस कर दे और क्रिसमस के रूप में ट्रेप को स्वीकार करे, क्रिसमस के तोहफे के रूप में। इस पत्र को कप्तान वॉन स्टॉले के रूप में हस्ताक्षर किया गया था। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि हम सीखते हैं जब दया और करुणा के माध्यम से हम दुनिया को बदल सकते हैं।
इसके अलावा यह हमें सिखाता है कि भौतिकवादी चीज़ें कभी आंतरिक आनंद नहीं लाती, केवल प्रेम और सम्मान यह लाती है। अपने को जीवन में, हर इंसान को जीवन का एक अच्छा खासा अनुभव होता है। कुछ चीज़ें पाने के लिए होती है, कुछ छोड़ने के लिए होती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ उदारता, उदारता से निर्वाह करना, सामने वाले की सच्चाई जानते हुए उसके प्रति उदार होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। यही इस स्टोरी में बताया गया है, बहुत बड़ा पुण्य का काम है। उदारता ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। तो इसके साथ विद्यार्थियों, यह सारांश यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और इसके साथ ही मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, ये समरी सुनने के बाद आप अपने आप को तैयार कीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस के अच्छी तरह से उत्तर देने के लिए, और अव्वल नंबर से पास होइएगा। मैं एक बार फिर गुजारिश करूँगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, जिससे और विद्यार्थियों को भी शेयर करने के बाद फ़ायदा मिल सके। खुश रहिएगा, अव्वल नंबर से पास होइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।